or welcome back to my channel. I hope everyone is doing good. So today's video will be on how you can reduce the frizz in your hairs. Now please understand one thing, that the hair type differs from person to person and there can be plenty of reasons why your hairs are frizzy. So humidity can be the number one reason why your hairs are frizzy. Like I live in Assam and the humidity out here is really high. तो जिन लोगों के hairs dry होते हैं या फिर scalp oily और hair dry का वो conflict होता है, तो उनको frizzy hairs का problem बहुत ज़्यादा होता है. So we can say that from region to region the hair type differs and that is very normal. और बाकी जो रीजंस है वो ये हो सकता है कि आप अपने हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी से धोते हो, या फिर आप अपने हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली धो रहे हो, और यू आर जस्ट स्क्रंचिंग योर हेयर्स विद टॉवल आफ्टर जस्ट वॉशिंग योर हेयर्स एंड एक्सेट्रा. ये वही घिसे पिटे रीजंस है. लाइक आई नो एवरीवन नोज दैट. और बाकी बातें मैं वीडियो के आगे बोलती जाऊंगी. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. So I'm taking a banana. I will place the banana inside a cotton cloth. I'm just doing it to take out the juice of banana. I don't want to put it directly onto my hairs because wash करने के बाद वो छोटे particles रह जाते हैं, तो मैं इसका juice ही लगाऊंगी. I will blend it a little bit with a fork. Now I will squeeze it to take out its juice. जितना हो सके मैंने उतना ही जूस निकाल लिया है. Now I will put 2 tablespoons honey. A few drops of tea tree oil. आप अगर चाहो तो इसमें एग भी ऐड कर सकते हो, मैंने उसको स्किप किया है. अब सेक्शन बाय सेक्शन मैं इसको लगाती जाऊंगी. Now banana has excellent properties to deep condition your hairs. It is rich in vitamin A and vitamin C. Honey is a wonderful moisturizer. It helps in damage repair. It will also add shine to your hairs and reduce the breakage of it. ये मास्क डैंड्रफ, इची स्कैल्प और हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है. Concentrate more on your hair tips. And since I have straightened my hairs, you may not see the results very prominently. But my original hairs are way too frizzy, so you can trust me on this. I will leave the mask for 30 minutes and here I have completed applying it. Here I have washed my hair. Please remember that do not rub your hairs like this. Just pat dry it, just the way I'm showing in the video. Rubbing your hairs may increase the chances of frizziness. And yeah, please do use a cotton cloth instead of a towel. And do not comb it immediately after washing. So मेरे बाल यहाँ सूख गए हैं और इसको सुखाने के लिए मैंने ब्लो ड्रायर यूज़ नहीं किया है. मैं कभी भी ब्लो ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको नेचुरली ही सूखने देती हूँ. और ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको एक वॉश में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा अपने हेयर्स पे. यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस like once a month. Shampoo, conditioner and the spa cream also plays a major role in frizz control. So the best spa cream I have ever used is the Matrix spa cream. It will cost you 685 rupees. The entire range of Matrix is really good for frizz control, like the shampoo, conditioner. I have used both of them. आई डोंट नो लाइक फ्रिज कंट्रोल बहुत ही अच्छे से होता है, लेकिन मुझे हेयर फॉल हो गया था उसको यूज़ करने से,
तो आई स्विच टू सनसिल्क अगेन, जो मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ वो ब्रांड. सो अभी शायद वो सूट करने लगा है, इफ़ that makes any sense. And I don't really recommend shampoo and conditioner usually to people. Like, I'm really scared of doing that thing. Like, I don't know, suitability of a shampoo and conditioner also differs, you know, from person to person. So like, सनसिल्क मेरे हेयर्स को सूट करता है, आपके हेयर्स को वो सूट नहीं भी कर सकता है. लाइक, use a shampoo that really controls your hair fall, and use a conditioner that just deep conditions your hair and makes your hairs frizz free. And it's a recommendation that just once a month you should always do spa on your hairs. अगर आपको ये केमिकल वाला स्पा क्रीम नहीं यूज़ करना है तो आप होम में DIY स्पा क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने बना के दिखाया था आप लोगों को, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी. सो आई यूज़ दिस स्पा क्रीम. लाइक, I have used a whole lot, so थोड़ा बाकी है. I have to, you know, refill this one. So you have to just keep this one for like 1 to 1.5 hours on your hairs and wash it away by normal water, and you see the amazing results. आपके hairs को ये काफ़ी ज़्यादा smooth, shiny और frizz free बना देता है. I will be just very honest with whatever products I'm using in my videos or suggesting to you. So I have used these products and I am recommending on the basis of that. And for serums, you can use the L'Oreal oil infused serum. I will pin up some of them here or here. You can use the Matrix one or the Strix one. Serums are really helpful in controlling the frizz of your hairs, you know, instantly. Like, if you are in a hurry, you just need to apply the serum all over your hairs and you are good to go. So we are at the end of today's video. Please do not forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel for those who are new to my channel. Hit that bell icon to stay updated. I will see you in my next video. Bye bye.